So good morning everyone and welcome to the morning meet. We'll start with technical and derivative updates first. So what we saw yesterday is basically Nifty did kick off the first week on a positive note, and we closed above 15,800 mark, and it was a 4-day closing high level for the Nifty. And throughout the day it had a very steady rise, so it didn't had intraday volatility and it didn't saw any sell-off from the high. So it opened on a negative note, but close almost near the day's high level. So it is a positive thing. And now, from the technical point of view, if we trade the recent swing high of 15,930, then the rally shall get extended towards 16,200, 16,300, while 15,500 is the key level to watch out for. If we break 15,500, then correction can emerge, and we may go and retest the June lows, which is 15,183 levels. Yesterday, sector specifically, we see FMCG continued to be the leader for the second straight day. It closed with a gains of over 2%. The rally was mainly on the back of correction in the global palm oil prices. So it's a correction in palm oil is positive for all the FMCG companies. So 2 days FMCG has been performing well. Even the banking and financials too closed with a gains of over a percentage, while auto, IT, metal and pharma did close mildly in the red, with metal being the worst performing sector for the day. Bank Nifty, if we see, it did outperform the Nifty for the third consecutive day, where it closed with a gains of over a percentage point. The rally was mainly led by sharp gains in ICICI Bank and HDFC and Axis Bank. And Bank Nifty has closed at 16-day high closing level, and now if we trade 34,150, which is the recent swing high, and close above it, then the rally shall get extended towards 35,000, 35,302. And the main level to watch out on the lower levels is 33,000. If you break 33,000 on lower levels, then we might consider this 34,150 as the lower high, and we may start a fresh round of correction. From the institutional side, if I did have a net sell figure, they had a net sell figure of 2149 crores. DI had a net buy figure of 1688 crores. Now on the derivative front, what we saw yesterday is Nifty future did saw some long addition to the tune of 3%, with an addition of 0.38 million shares. And now the total outstanding position stands at 13.82 million shares. Even the PCR OI2 saw a small downtick, where it closed at 1.13 as compared to its previous close of 1.14. And from the option data, what we saw is put writers were active at 15,700 and 15,800 strikes. So the addition was to the tune of 2.38 and almost 1 million shares. So which indicates 15,700 being the immediate support, and the call writers were active at 16,200 strikes, with an addition of 1.34 and 1.86 million shares in the strike. So 16,000 and 16,200 could be the overhead resistance for the time being. And even on the Bank Nifty futures, the total OI stands at 27.79 lakh shares. They even that saw some long addition to the tune of 2.7%. And from the FI in stats in derivative, there a net sell figure in index future, that is 614 crores. Index option, there a net buy figure of 1482 crores. Stock futures, there a small net figure of 358 crores. Stock options, there a net sell figure of 105 crores. And the top 5 long additions in the stocks were seen in Coromandel, ABB, UBL, Abbott and Deepak Nitrate, while some shorts were seen in Bsoft, India Mart, Ashok Leyland, Polycab and Persistent. And on the report call front, in the technical report, we have given buy in Pidilite. You can buy in the range of 2182 to 2192. Stop can be placed at 2141. Target is 2277. And the derivative report, we have given buying Axis Bank futures. We can buy in the range of 652 to 656. Stop is 640. Target can be placed at 682. So that would be it from my end. I'll pass it over to Vishal sir for further research updates. Over to you, sir.
Yeah, good morning. From a couple of research and the news updates which came in, first is on HDFC Bank on Monday. Yesterday, they reported that they received approval from RBI for the amalgamation with HDFC, and I think this was one of the important element in terms of various regulatory approval which was required. In the next step, what is pending is CCI approval, NCLT approval, and then there are respective shareholder approval. So I think overall this is the positive development, and we have a buy rating on both the stocks, which is HDFC Bank and HDFC Limited, and the target price on HDFC Bank is 2020, and on HDFC Limited is 3140. Next is on a couple of companies in the banking side. They've reported their provisional numbers. And overall, I think if you look at on a banking space, most of them, they've reported a pretty strong set of year Y&Y advances number. To start up with HDFC Bank, they have reported a 21.5% Y&Y increase in gross advances. And if you look at on a sequential basis, it was up by around 2%. Next is on Federal Bank. They reported a gross advance, which is increase of around 16% on Y&Y basis. And their deposit also seen an increase of around 8% for Federal Bank. Next is on IndusInd. So again, they have reported double-digit kind of net advance number, which is up by around 18% on Y&Y basis. And if you look at net advances, increase 4% for IndusInd Bank on a quarter-on-quarter basis. Overall, I think if you look at a strong set of volume in the sense the advances growth which the company reported, and the same thing we expect this to will benefit the company when they start reporting number, at least in the banking side. Next is on Tata Steel. So through its subsidiary Tata Steel Long Product, they have completed the acquisition, and through the transaction, if you look at overall, the pricing was at around 12,100 crore, and it is done on a strategic basis. And in terms of business benefit, it will provide a synergy benefit for the infra sources and various long-haul products. In terms of our rating point of view, Tata Steel, we have a hold rating on the stock with target price of 1,163. Next is on Marico. So Marico has acquired additional stake in Apcos Natural, and they have increased the equity stake to around 56%. And if you look at Apcos Natural, has a brand which is Just Herb. Now in FMCG space, we are seeing most of the companies, they are going into herbal side, which is a positive trend that we are noticing. And overall, this is positive for Marico. And in terms of rating, we have a buy rating on the stock, the target price of 610. Next is on palm oil. So palm oil is currently trading at its lowest level at around December 2021. We have seen the last in terms of absolute their costing point of view or index level point of view, it was at probably 6 months back the same number we have seen. Indonesian has proposed a raising palm oil export quota. So I mean, this increase in the palm oil future, which is kind of negative for many of the FMCG company, was led after Indonesian has raised the palm oil, reduced the palm oil export quota, and then they have further reduced or probably increased the export duties. Now, after this relaxation, we are seeing a cut in the palm oil futures in the index, and the key beneficiary of this particular level reduction is HUL, Godrej Consumer Product, Britannia Industries. Edible oil prices has also moved in tandem with the palm oil prices, and from edible oil correction, this is positive for Marico, Ruchi Soya, Adani, Wilmar. Overall, I think in this in this volatile market, defensive stocks, they are doing pretty well. And overall, these news flows, which include a palm oil reduction prices, this is positive and probably further catalyst for the stock performance from here on. Next is on Tata Motors. So Tata Motors, though we don't have a rating on the stock, but the Tata Motors has announced they want to increase a five-fold increase they are targeting in the electric vehicle sales by FY24. So right now it's basically we are already in FY23. So by FY24, whatever the sales that they are doing, it will increase to around
five-fold increase that they're targeting. And if you look at Tata Motor as a whole, they're targeting to cross around 50,000 odd crore in FY23 and further to around 1 lakh odd vehicles by FY24. Currently, the EV sales is roughly to the tune of around 20 odd thousand vehicle for Tata Motors. And if you look at EV, it contributes around 8% to its total PV sales. And overall, I think in terms of aggressive push, is basically saying that overall the market or probably the industry of the vehicle side is moving towards the EV. Definitely, in the short period of time, we have seen a couple of incidents which has raised concern, like what is the future outlook, because couple of fire incidents that we have seen. But I think any technology change which happens, it do see such kind of incidents. But important thing to notice, whether we are seeing a new launches by different companies. So where Tata Motors has said that they will be launching various products which will increase their overall sales to around 1 lakh or odd vehicle for in the EV side. It is a positive development, and plus there has been a softening of commodity prices. Commodity price weakening is overall positive for auto pack as a whole. Last thing from my side is on TCS. There was a legal battle, if you recall, wherein the court has told TCS to pay around $280 million for as a compensation, which is basically the epic legal battle which was there. And now the court has reduced the compensation amount to around $140 odd million. But from P&L point of view, TCS has already provided this in the books, so we can expect a reversal of this, which definitely it's a one-off. But from P&L point of view, that kind of gain we can see. Further, Tata Consultancy Services, they have said that they will be further appealing on this order, which is making them to pay around $140 odd million. So further, any reduction on this front, which will be seen further positive for the stock. Yeah, that's it from my side, and I'll hand it over to team now. Over to you. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. Now, see for further research updates, Kotak Mahindra Bank has been penalized by the RBI amounting to 1 crore. This is according to certain regulatory guidance not being complied by the Kotak Mahindra Bank. And a similar kind of amount has been slapped on IndusInd Bank also. Though the amount is small, but these are the penalties on them. Vedanta has also reported their business update. They have reported 3% increase in aluminum production, that is to 565,000 tons in April to June quarter. And mine metal zinc has increased 14% to 252,000 tons due to higher iron ore production across all the mines and by the better mill recovery. USFD has issued a warning letter to Cipla, citing 2 observations relating to their good manufacturing practices in the Indore facility. These observations are related to drug filing for a product that was to be manufactured at their plant. Muthoot Finance has also gotten approval by the RBI to open their 150 branches across the country. This non-bank lender plans to open the branches mostly in the southern and the northern parts of the country and make this zone stronger for them. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, team. National Fertilizer Limited records total fertilizer sales of 15.58 lakh million ton for April-June 2022. The growth is almost 47% in fertilizer sales during April-June 2022. Very positive for agrochemical company. We like Bayer Corp, Coromandel, UPL, all these agrochemical company, because the monsoon has covered almost all part of the country. There is an update on monsoon also, where monsoon has fully covered the country. And in June we had 8% deficit, but whatever Met Department is saying, they think July month, which is the best month for monsoon, the deficit will be covered. So we will have a normal monsoon, is what every analyst is saying on Met Department. So I think this is very positive for agrochemical companies, FMCG companies. For FMCG companies, it is double whammy. You have palm oil prices, which is lowest since December 2022 or 21,
So you have Britannia, ITC, HUL, Dabur, Marico, Nestle, Godrej CP, even Adani Wilmar, which will benefit due to that. So I think FMCG as a sector will outperform the market. M&M Finance has said growth momentum continues. Company has disbursed almost 3,750 crores for this quarter, which is 115% year-on-year growth. AUM is at 67,500 crores. Collection efficiency also improved. It is at 96%. So overall, the AUM has increased year-on-year basis 6%. VA Wabak secures a repeat order worth 430 crores from Reliance Industries for 15 MLD desalination plant at Jamnagar. Already, Wabak has executed 24 MLD SWRO plant. What is SWRO? It is seawater reverse osmosis. So they make seawater into a usable water, potable water. So in that, Wabak is a leader in India. Tata Power to set up a mega solar manufacturing plant in Tamil Nadu, signs a MOU with the state government for 3,000 crores. Investment of greenfield manufacturing capacity of 4 gigawatt solar cell and 4 gigawatt solar modules. So it will be a manufacturing base for solar modules will be set up in Tamil Nadu. Very positive for Tata Power. Tata Power at 209.8 rupees is value buy for long-term investor. June trade number, export has increased by 17% at $37.94 billion. Trade deficit at $25.63 billion, and import has increased by 51% at $63.58 billion. So we need to understand it is the highest import we have done. The trade deficit is widening. So we are in a very bad situation. So that there can be rally due to cooling of prices, but no, we need to understand high crude prices, higher gold imports, and higher electronic imports are impacting India's trade deficit. $25 billion is too much. That used to be our export previously. So we need to be very careful. Market can rally for next 2-3 weeks. But again, a mega correction will happen due to trade deficit, which is alarming. Europe is having a huge power cut due to Russia gas supply. So many chemical companies which are based out of Germany are unable to operate. So it benefits Indian specialty chemical company. The major beneficiary will be Deepak Nitrate and SRF. But other companies like Ami Organic, Vinati Organic, Gujarat Alkali, Tata Chemical, every chemical company to an extent, they will also benefit because Europe needs to import from India if they are not able to operate their plant. So with that, over to you, Miraj. Yeah, thank you, Prabhakar sir, निकुंज, जितेंद्र एंड विशाल सर फॉर ऑल दोज अपडेट्स. अब हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. यदि आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर आया था उसको अमेलगेशन को अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई का. अब सीसीआई, एनसीएलटी और शेयर होल्डर का अप्रूवल पेंडिंग है. तो ये एक पॉजिटिव होगा ओवरऑल एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए. आने वाले समय में देखेंगे कि ये सारे अप्रूवल्स मिलने के बाद एक ओवरऑल मर्जर होता हुआ दिखेगा इन लोगों के बीच में. और एचडीएफसी बैंक में हमारा बाय टारगेट है 2020 का, और एचडीएफसी लिमिटेड में 3140 का टारगेट है. दोनों पे हमारी बाय रेटिंग है. प्रोविजनल नंबर्स यदि आप देखोगे बैंक के आए हैं और सभी बैंक के प्रोविजनल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं. एचडीएफसी की बात करें तो एडवांसेस में 21.5% की बढ़त देखी गई थी ईयर ऑन ईयर. यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 2% की बढ़त देखी गई थी. फेडरल बैंक में 16% की बढ़त देखी गई थी. एडवांसेस में, डिपॉजिट्स में भी बढ़त देखी गई थी. इसके अलावा यदि आप इंडसइंड बैंक की बात करें
तो एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर 18% की बढ़त देखी गई थी और यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 4% की बढ़त देखी गई थी। इसके चलते हुए हमें लगता है कि जब ओवरऑल नंबर्स आएंगे बैंक के तो वो काफी अच्छे आएंगे और आने वाले समय में एक ओवरऑल पॉजिटिव बूस्ट इसके चलते हुए बैंक्स को मिल सकता है। टाटा स्टील लॉन्ग ने एक्विजिशन किया हुआ है नीलांचल का 12,100 करोड़ में ओवरऑल, तो ये एक पॉजिटिव होगा टाटा स्टील के लिए। हमारे इस पे ओवरऑल बाय रेटिंग है और 1163 का टारगेट है। मेरिको को यदि आप देखोगे तो उन्होंने एपकॉस नेचुरल का एक ओवरऑल टेक ओवर किया है, अपनी स्टेक 56% तक बढ़ा के ले चले हैं। एपकॉस नेचुरल यदि आप देखोगे तो वो हर्बल की साइड पे ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा मेरिको का। इसके अलावा जो पाम ऑयल के प्राइसेस है जो कि 2021 दिसंबर के लोस पे टच होते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक बड़ा बूस्ट होगा सभी एफएमसीजी कंपनियों के लिए, क्योंकि पाम ऑयल एक बड़ा रॉ मटेरियल है उनका और उनकी बढ़ती हुई कीमतों के चलते हुए हमने देखा था काफी सारी कंपनीज के मार्जिन्स पे भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था। तो ये एक ओवरऑल पॉजिटिव होगा। यदि आप देखोगे तो सभी कंपनियों के लिए, अधिकतर HUL, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज, ब्रिटानिया के लिए भी। और पाम ऑयल के चलते चलते एडिबल ऑयल में भी करेक्शन देखा गया है, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा मेरिको, रुचि सोया और अदानी विल्मर को। टाटा मोटर्स ने कहा है कि ईवी व्हीकल पे उनका एक खास फोकस रहेगा। ओवरऑल जो उनकी सेल्स है FY24 तक वो 5x करना चाहते हैं। करंटली वो अराउंड यदि आप देखोगे तो 20,000 गाड़ियों के आसपास करंटली बेचती है। FY24 तक ये आंकड़े को वो 50,000 गाड़ियों तक लेके जाना चाहते हैं और आने वाले समय में 1 लाख का ईवी व्हीकल्स का सेल करना चाहते हैं। इसके लिए ओवरऑल उन्होंने इसके पहले भी घोषणा की थी कि वो ओवरऑल अपना ईवी पोर्टफोलियो है वो काफी तेजी से एक्सपेंड करेंगे। और मौजूदा समय में यदि आप देखोगे तो 8% ईवी सेल्स ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती है उनकी पैसेंजर व्हीकल सेल्स का। तो ये यदि टाटा मोटर्स अचीव करता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उनके लिए। हालांकि इस पे हमारी अभी कोई फॉर्मल कवरेज नहीं है। TCS का एक बहुत लंबे समय से एक लीगल बैटल चल रहा था जिसमें कोर्ट ने उन्हें कहा था कि इनको $280 मिलियन का कंपेंसेशन पे करना होगा। हालांकि TCS ने ये पूरा $280 मिलियन प्रोवाइड किया था, पर अब ओवरऑल इस पे एक फैसला आया हुआ है कि वो 280 मिलियन को घटाकर 140 मिलियन किया गया है। तो ये एक वन ऑफ गेन उनके बैलेंस शीट में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 280 मिलियन का प्रोविजन किया था। तो पर TCS ने ये भी कहा है कि ये 140 मिलियन के जो पेमेंट है उसके लिए भी वो कंटेस्ट करेगी कोर्ट में, और हो सकता है यदि आने वाले समय में ये भी अगर कम हुआ तो उसका और बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा TCS को। इसके अलावा RBI ने यदि आप देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक पे एक पेनल्टी डाली हुई है अराउंड 1.05 करोड़ की। ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस या गाइडलाइंस को नहीं मीट करने के लिए पेनल्टी लगी हुई है। सिमिलर पेनल्टी इंडसइंड बैंक पे भी लगी हुई है। हालांकि पेनल्टी की साइज ओवरऑल बुक साइज से काफी छोटी है तो इतना मटेरियल इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखेगा। वेदांता ने कहा है कि वो 3% अपने एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को बढ़ाएगी 5,65,000 टन तक का अप्रैल जून क्वार्टर में। और आने वाले समय में ये ओवरऑल इंडिया का बिजनेस जो है वो 14% से बढ़ाएगी और 252 टन से बढ़ाएगी ड्यू टू हायर आयरन ओर प्रोडक्शन। तो ये ओवरऑल बेटर होगा वेदांता के लिए। इसके अलावा US FDA ने वार्निंग लेटर इशू किया है सिप्ला को कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ उनकी जो इंदौर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके ऊपर। हालांकि पूरे ऑब्जर्वेशंस क्या है वो अभी तक पता नहीं है, पर वो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा सिप्ला के ऊपर। मुथूट फाइनेंस ने कहा है कि वो गोल्ड लोन फोकस्ड NBFC जो है उनकी उसको ओवरऑल अप्रूवल मिल गया है RBI से एडिशनल 150 ब्रांचेस अक्रॉस कंट्री खोलने के लिए। तो ये इन्होंने कहा है कि वो सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसके चलते हुए उनकी वहां पे ओवरऑल पकड़ ज्यादा बेहतर बन सकती है। नेशनल फर्टिलाइजर्स की अगर आप सेल्स की बात करें तो 15.58 लाख मिलियन टन का सेल्स हो चुका है इस क्वार्टर में। अप्रैल जून के महीनों में 47% ग्रोथ देखने मिला था। इसका सीधा सीधा ये फायदा सारे ही फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी भी इसमें ये एक बात है कि ओवरऑल जो रशिया के साथ यूक्रेन की वॉर के चलते हुए ओवरऑल जो गैस की सप्लाईज है वो काफी सारी जर्मनी का कंपनीज में नहीं जाती हुई दिख रही है, जिसके चलते हुए उनका ओवरऑल जो फर्टिलाइजर और उन सब में जो वो करते थे और प्रोडक्शन वो बंद होता हुआ दिखा है और वो ओवरऑल इंपोर्ट करते हुए दिखे भारत कंपनियों से।
तो कंपनीज जैसे कि बेयर, कोरोमंडल, यूपीएल, दीपक फर्टिलाइजर, एसआरएफ, अमी ऑर्गेनिक्स, विनती, गुजरात अल्कली, टाटा केमिकल, इन सभी फर्टिलाइजर कंपनीज को एक अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जो ये हमारे रेडार में रहने चाहिए। अगर आप मॉनसून की बात करें तो जुलाई महीने में जून महीने में मॉनसून में 8% डेफिसिट रहा था, पर सभी एक्सपर्ट्स का मानना है और इवन आईएमडी का मानना है कि जुलाई मंथ में रेनफॉल अच्छा खासा बारिश होती हुई दिखेगी और वो डेफिसिट कवर होते हुए दिखेगा और हमें अंततः नॉर्मल मॉनसून ही में देखने मिलेगा। तो ये भी एक ओवरऑल पॉजिटिव होगा क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा और इसके चलते हुए भी फर्टिलाइजर कंपनीज को बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज को भी एक अच्छा खासा बेनिफिट आता हुआ दिखेगा क्योंकि पाम ऑयल के भी कीमतें घटती हुई दिख रही हैं और एक नॉर्मल मॉनसून भी उनके लिए फायदेमंद होता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने कहा है कि उनका ओवरऑल जो ग्रोथ है 3750 करोड़ का क्वार्टर उनको लोन्स में ग्रोथ मिला हुआ है। एयूएम जो है वो 67,500 करोड़ पे है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ के 96% पे आई है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। वीए टेक वाबक जो कि कंपनी को 430 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है रिलायंस की तरफ से सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। ये बेसिकली सी वाटर को रेगुलर यूज के लिए कन्वर्ट करते हैं और ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक लीडर कंपनी है। हालांकि ये 15 MLD एसएल का ऑर्डर मिला हुआ है उनको जामनगर रिफाइनरी के लिए। वो पहले भी 24 MLDS ऑलरेडी ये WRO प्लांट में कर चुके हैं। टाटा पावर ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है 3000 करोड़ का सोलर के लिए, जिसमें 4 गीगावाट वो सोलर पैनल्स के लिए करेंगे और 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा टाटा पावर के लिए। 208 पे यदि आप देखोगे तो टाटा पावर एक अच्छी खासी वैल्यू बाई है। अभी ओवरऑल ट्रेड डेटा देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स हमारे 17% से बढ़ के आए हुए 37.94 बिलियन डॉलर्स का, और इंपोर्ट्स देखोगे तो वो 51% से बढ़ के 63.58 बिलियन डॉलर्स पे आते हुए दिखे। जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक चिंता का विषय है। काफी बड़ी ट्रेड डेफिसिट दिखी हुई है 25.63 बिलियन डॉलर्स की। एक समय में हमारे जो इंपोर्ट्स होते थे वो इतने हो गए थे, तो ये ओवरऑल एक चिंता का विषय है। हाई क्रूड है, हाई गोल्ड इंपोर्ट और इलेक्ट्रिक इंपोर्ट्स की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ती हुई दिख रही है और इसके चलते हुए हमें लगता है कि आने वाले समय में यदि ये कम नहीं हुई तो एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। तो इसके लिए हमने ये बार बार कहा है कि ये ओवरऑल जो रैली है वो रैली को यूटिलाइज कीजिए यदि आपके पास कोई पोजीशंस अटक चुकी है, या तो करेक्शंस को स्लोली और स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए एसआईपी की तरह, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है जो कि यहाँ से और भी नीचों के स्तरों पर हमें मार्केट देखने मिल सकता है। So that's it all from our end. We'll conclude the call over here. Thank you everyone for joining in and have a nice day.